अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 चैप्टर्स अगर आप वो कर लेते हैं तो आप तकरीबन 75 नंबर का पेपर कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल के ऊपर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन द मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीबोर्ड्स। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 2 है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द रूटर एंड गेटवे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द वैन एंड मैन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द इंटरनेट एंड लैन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 3 है, इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द रिसीवर एंड ट्रांसमिशन मीडियम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द data communication and its components. Question number 3 है differentiate between the encoder and decoder. Question number 4 है what are the signals and with their examples. Question number 5 differentiate between the bit and byte. Question number 6 differentiate between serial and parallel transmission. Question number 7 differentiate between the broadband and baseband. Chapter number 4 का पहला क्वेश्चन है what is the Dextra publishing. Question number 2 describe electronic banking. Question number 3 how the computer can used in departmental stores. Question number 4 how computer are used in marketing. Question number 5 what is ATM and its uses. Question number 6 what is the difference between CAD and CAM. Question number 7 define computer aiding learning. Question number 8 what is internet banking. Question number 9 write 3 types of e-commerce. Question number 10 राइट एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ IO यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड कैशे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। क्वेश्चन नंबर 5 what is the difference between SRAM and DRAM. Question number 6 what is the difference between PROM and EPROM. Question number 7 why is RAM called volatile. Question number 8 why does SRAM uses less power than DRAM. Question number 9 what is CPU. Question number 10 what is a computer architecture. Question number 11 differentiate between volatile and non-volatile memory. Question number 12 describe the role of memory management. Question number 13 लिस्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वायरस एक्टिवेशन इन अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज बायोमेट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन सिक्योरिटी राइट इट्स ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 5 differentiate between virus and antivirus. Also write the name of types of virus and names of antivirus program. Question number 6 what is data security and writes its importance. Question number 7 what is a privacy issue. Question number 8 define boot sector and explain its working. Question number 9 define the term backup, write its importance. Question number 10 state the purpose of software. नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ कंप्यूटर नीड्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GUI and CLI. Question number 4 what is the difference between single user and multi user operating system. Question number 5 define desktop and writes the purpose of recycle bin. Question number 6 describe the Internet Explorer and use of Windows Explorer. Question number 7 what do you mean by plug and play. Question number 8 what is the my document and writes the use of my folder. Question number 9 what is the difference between multitasking and multiprocessing operating system. Question number 10 describe control panel. नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग. क्वेश्चन नंबर 2 लिस्ट ऑल फीचर ऑफ फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 3 राइट द यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड फुटर. क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड
copy command. Question number 7, what is WYSIWYG? Question number 8, list all future of simple word processor. Question number 9, write the names of two simple टेक्स्ट एडिटर। यूनिट नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इसका पहला सवाल है व्हाट इज स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज चार्ट, राइट द टाइप्स ऑफ चार्ट इन एमएस एक्सेल। Next question number 3 है list the benefits of spreadsheet. Question number 4 है list all the formulas of MS Excel. Question number 5, how formula is used in MS Excel. Give an example. Question number 6, what is the difference between worksheet and workbook. Question number 7 है list all the function of MS Excel. Question number 8 है compare relative and absolute referencing. Question number 9, what is the difference between formula and function. Question number 10 है what is the cell address and name ranges. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ईमेल एड्रेसिंग, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डीएनएस। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इंटरनेट एंड गिव इट्स यूजेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डोमेन नेम इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द पर्पस ऑफ डीएनएस। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन यूआरएल। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन वेब ब्राउजिंग। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि मैं लास्ट के ऊपर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नज़र आ रहे हैं। इसमें देख सकते हैं ये पहला चैप्टर है। इसमें 2 MCQs, 3 शार्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग, टोटल 16 मार्क्स का पेपर है। इसी तरह यूनिट नंबर 2 है, इसके 2 MCQs, 2 शार्ट और 1 लॉन्ग, टोटल मिला के 14 मार्क्स का पेपर है। इसी तरह यूनिट नंबर 3 है, 2 MCQs, 2 शार्ट और 1 लॉन्ग, 14 मार्क्स का पेपर। यूनिट नंबर 4 है, 2 MCQs है, 4 शार्ट, इसमें से लॉन्ग कोई नहीं है और 10 मार्क्स का पेपर है। इसी तरह यूनिट नंबर 5 है, 1 MCQs है, 6 शार्ट क्वेश्चन हैं और इसके अलावा 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये टोटल मिला के सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 21 मार्क्स का है। तो टोटल मिलाएं इनके तो 75 मार्क्स होते हैं। इसमें चॉइस भी होती है। तो अगर आपने ये पेपर करना है तो पेपर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 5 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs हर तरह से करने हैं। तो बाकी जो चैप्टर हैं उनके आपने MCQs कर लेने हैं, तो आपका तकरीबन सारा पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।